here in front of me. I strongly feel love. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हैं यहाँ पर स्लाउ में, स्लाउ चैवरी सेंटर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। ये जो इफ्तारी है ये ऑर्गेनाइज है बाय स्लाउ रेफ्यूजी सर्विसेज में। बहुत कुछ खाने पीने को है, बहुत कुछ उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। वेरी नाइसली टेबल्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं और हर टेबल के ऊपर उन्होंने पानी रखा हुआ है, खजूरें रखी हुई हैं, फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है और साथ ही ये रमज़ान मुबारक का है। साथ पे उन्होंने ये देखे, ये उन्होंने मेन्यू भी रखा हुआ है कि जो गेस्ट आएँ तो उनको पता लगे कि यहाँ पर क्या क्या कुछ होगा। और साथ ये है इनका प्रोग्राम भी, कौन कौन सी इनकी तजवीज़ है, अल कुरान है और अज़ान होगी, फिर उसके बाद मगरिब की प्रेयर्स है। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये देखें, यहाँ पर उन्होंने काफ़ी लोगों का बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है। पानी भी है और ये देखें, ये रूह अफ़ज़ा भी है यहाँ पर और बहुत उन्होंने ड्रिंक्स वगैरह भी है। और इसकी डेकोरेशन देखें, बैलून्स लगे हुए हैं यहाँ पर, टीवी उनका स्क्रीन के ऊपर नशीद चल रही हैं और ये रमज़ान मुबारक का डिफरेंट डेकोरेशन की हुई है और बहुत से लोग हैं यहाँ। ये देखें जी, यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए हैं। कुछ रेफ्यूजीज़ हैं, कुछ स्टाफ हैं और कुछ स्लाउ कम्युनिटी सर्विसेज से हैं, कुछ स्लाउ काउंसिल से हैं जो यहाँ पर मेक श्योर कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑन प्लेस एंड ओवर है, इट्स रेडी। और ये यहाँ पर देखें, ये इनका फूड रेडी है, खजूरें रेडी है एंड द समोसास एंड द सैलड and that's different food is ready। और ये इनका सारी प्लेट्स वगैरह है, ऑर्गेनाइज्ड है। So what's this? That is Yemeni's fried bread. That's Yemeni's bread? Yeah. Yemeni's bread? Yemeni's bread. Is it sweet or is it savory? It's not sweet, it's a little bit sour. Sour. You can have it with And what's in there? That one is sort of mandi. That is Lebanese. Oh, what's mandi? What's mandi? Lebanese mandi is rice with lamb. Okay. Yeah. And that one is similar, but it's a chicken. Okay. So we have 2 lamb and 1 chicken. Okay. And that salad? The salad is to go with lamb. Okay. And what's about this This one? one is Moroccan soup. It's called harira. Okay. Can I soup. can I see? Yeah. Yeah. You can see, hold on. That is got chickpea, lentil, That's the Moroccan soup This is called Moroccan harira. That's special in Ramadan. Especially it's special for Ramadan. So what have you bought? From Carbon restaurant. I'm not sure what they brought, but it looks like smells delicious. Okay, it smells good. This is the muntu. Muntu? Muntu? Okay. MashaAllah. Yeah. Can I? Yes, you can. This is a muntu. Oh wow, very nice, very yummy. Yummy. Is it vegetarian? It's made up of meat. Meat. Cheese. Vegetarian. It's vegetarian, made up of cheese. I think it's vegetarian. Vegetarian. Wow, it smells very nice. Wow. Let's see it. Thank you very much. Thank you. And you have this ruh afza drink That one mix it with the milk. Sort of syrup with Yeah, with the milk. Yeah. Yeah. What's your name? My name is Omar. 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 Okay, Omar. Thank you very much, Omar. You're welcome. What's your name? Leif, that's my son. That's your. Oh yeah, that's your son. Okay.
जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो रेफ्यूजी सेंटर्स में रहते हैं, जो रेफ्यूजीज़ अकोमोडेशंस में रहते हैं, जिनके पास एक प्रॉपर हॉट मील नहीं है रमज़ान के टाइम पे, तो उनको इस स्लाउ रेफ्यूजी सर्विसेज ने विद स्लाउ काउंसिल ने मिलके उनके लिए ये हॉट मील फूड अरेंज करते हैं। ये देखिए लोग आना शुरू हो गए हैं। नज़र आ रहे हैं जैसे स्टाफ कुछ जी। हमारे साथ अभी यहाँ पर है ताज मोहम्मद, ये है CEO ऑफ स्लाउ रेफ्यूजी सेंटर। चलिए अब हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है इसके पीछे क्या है। अस्सलाम वालेकुम ताज। जी ये है ताज मोहम्मद, CEO ऑफ स्लाउ रेफ्यूजी सर्विसेज, और ये जो अफ्तारी है ये इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की हुई है। ताज क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी। जी ज़रूर। The idea came that there are a lot of refugees who hardly get any food sometimes because they are either asylum seekers or refugees, and even if they do get, sometimes they are staying in the hotels, they only get sandwiches. So we try to make sure that at least they can get one hot meal in Iftar, open day Iftar. So we got in touch with the Slough Council as well, and we got some funding from them. So we organized this with help of our staff, volunteers, jo bhi hai, so we can help people one day forget about their worries and things like that. So how many days you organize it? It's twice in the month of Ramadan. It's on Wednesday today, which is today, and then next week Wednesday as well. Okay. So are you planning to organize anything after Ramadan? We do food parcels as well for Ramadan, for basic essential food like rice and oil. But we're also thinking if we got some money left over, then we'll do some Eid program. So we'll do Eid, especially like meat and sweets and things like that for the children, inshallah. So what other services do you provide for the refugees? We actually have we are actually registered with OISC, with the Office of Commission, Immigration Commission, and we provide help and support to asylum seekers and refugees. We help them with the applications, we help them with English classes, we help them with sewing classes, giving them skills. We're a family, we're part of a family, so they become a part of our family. ये coloring pencils and then activity books हैं for children जो आए हैं, बच्चे यहाँ पर आए हैं और आके they want to get engaged। ये एक्चुअली बच्चों का कॉर्नर है, यहाँ पे गिफ्ट भी है, यहाँ पे टॉयज़ भी रखे हुए हैं, यहाँ पे कलरिंग पेंसिल्स भी हैं, और यहाँ पे देखें ये लोग लेडीज़ बैठ के जो है इस टेबल के ऊपर जब with our brother Madni Nia with some Nasheed and Tajweed al-Quran. Can I have a big applause for brother Madni Nia? ये अब इनका जो है वो प्रोग्राम शुरू हो गया है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम। Come on guys, let's try that again. I know we're all fasting, I'm fasting too, so let's inshallah. Come on Slough, let's try that one more time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम। MashaAllah, Allah bless you all. وَوَضَعْنَا أَنْكَ وِذْرَكَ الذي أنكد ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي. The V&A Museum. These are iftars for everybody. And this is really what Ramadan actually is about. The Prophet, peace be upon him, when he went into Medina, what did he say? One of the very first teachings was, spread peace, feed the people, pray at night, and keep the ties of kinship, so keep the ties within your family.
And I think to myself sometimes, if we as Muslims just did those 4 things, I think the world and the country would be an even better place than it already is. ये मगरिब की अज़ान हो रही है. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله हमारी अफ्तारी की थी. Sisters or something. You almost look like me. Yeah, what? She has my son. No, someone talked a lot about you. I didn't talk to you. दुआ अफ़ज़ा वाला दूध है. Such a good student. She don't talk about you all the time. अंदर मीठा भी नहीं. Remember this teacher? Yeah. So she was. I picked her up. I said, "Come on, let's go." You're from Pakistan. I told her all the time. Oh, brother. Ready. Give me one. अफ्तार एट स्लाउ रेफ्यूजी सर्विसेज जो उन्होंने अफ्तार अरेंज किया है विद स्लाउ काउंसिल. और ये है इनका खाना जो अभी ये सर्व करने वाले हैं. व्हाट्स दिस? दस सैलड है और ये चिकन रोस्ट है. वेरी 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 लग्जरियस सैलड. सॉरी, वेरी लग्जरियस अफ्तारी. वेरी जेनरस एंड दे हैव जूस फॉर बच्चों के लिए जूस भी हैं. Get a couple of spoons, big spoons, for the salad. For the salad. यहाँ पे उन्होंने ये बफ़े टाइप किया हुआ है कि यहाँ पे आप क्यू में आए और सबको वो एक एक प्लेट बना के देते हैं. और वो जो है ताकि हर एक को ऑर्गेनाइज तरीके से वो खाना मिल सके. और ये किचन है, किचन में सबको ये प्लेटर बस बना के दे रहे हैं. ये देखिए इसमें है मोरोकन सूप है. चलो जाके देखते हैं आगे ये क्या क्या कुछ प्लेटर में बना के. So you have one samosas, one 2 samosas, a mandazi, uh-huh, which is like a cake. uh-huh, It's nice. With the mandazi, and then you have harira soup, okay, which is a Moroccan soup. wow, Very nice. wow, that's nice. ये इस तरह ये बना के दे रहे हैं सबको ताकि सब लोगों को ये अफ्तारी के लिए इनके पास उनका कुछ खाने को उनको प्लेटर मिल जाए. अभी खाना जो है वो इसके बाद वो सर्व करेंगे. ये लोग देखें अफ्तारी खोल रहे हैं और ये अफ्तारी कर रहे हैं. जूसेस भी हैं, ड्रिंक्स भी हैं. और अभी उनको खाना भी सर्व होने. क्यूट सा बच्चा भी यहाँ पर सो रहा है और इस अफ्तारी को एंजॉय कर रहा है. That's your son? Yeah. What's his name? Yusuf. Yusuf. And you are from which country? Iraq. Iraq. Okay, are you enjoying here? Thank you very much. थैंक यू जी. मेरे साथ अभी हैं ये स्लाउ काउंसिल से बहुत अच्छे यंगस्टर्स हैं और ये एक स्पेशल प्रोग्राम रन करते हैं फॉर चिल्ड्रन, रेफ्यूजीज चिल्ड्रन. सो लेट मी आस्क देम फ्यू क्वेश्चंस. लेकर आ रहे हैं फॉर दिस वंस टू गिव इट टू रेफ्यूजीज. यहाँ पे जो रेफ्यूजीज है सो उनके लिए काफ़ी चीज़ें ले. It's the half program. Half program, which is to do with the holidays. So they have a program in the holidays to keep children busy.
They will be able to tell you more. Okay. Yeah, they will be able to tell you more. But that's the program. So they keep children busy and they feel something, and they go together with Ramadan. Yeah. Activities for the children. Yeah. Okay. So this one is the holidays organized by Slough Holiday Activity and Food Program. Assalamu alaikum. My name is Shakir Hussain. I work with Flavoured Council on the What's your name, please? Shakir Hussain, and I work on the HAF program, Holiday Activities and Food, at Flavoured Council. So we arrange. So this program is a holidays activities food program. As you can see, we basically run a range of activities during the school holidays, winter, Easter and summer, for low income families, children on free school meals. And today we're working with the Refugee Council to host an Iftar event for refugees, so they get a feel of how it is at home and opening with their families, etc. So is it free or is it funded, or do they have to pay something? It's funded from the central government Department for Education. So we basically it's free for families that are on free school meals, and and any families that are vulnerable, that we assess that are vulnerable can attend the program for free. Yeah. Thank you very much. Thank you for giving us a brief intro about the Slough Holiday Activities and Food Program. Thank you very much. Thank you. And Ramadan Mubarak to you. So, what's your name, please? So, what do you work for? I manage the holiday activities and food program for Slough Council. So you bought something? Yes, so in conjunction with the library, with Slough Library, they donated the books so that we can give the families, so that the children can have something to read during the holidays and some fun activities tonight. So all these books are provided by The Slough Library. Slough Library. Wow, very nice books. Very nice indeed. Multilingual. Yeah, very generous of them. Yeah, and they Yeah, are all multilingual, definitely. And Yes. what's your name, please? It's Diane Williams. Thank you Thank very you. much. Thank you. Thank you very much. जैसे कि आपने देखा कि लंदन में अफ्तारी किस तरह मनाई जाती है, ये फ्री अफ्तारी है जो स्लाउ रेफ्यूजी सर्विसेज ने प्रोवाइड। चले हम भी अफ्तारी करते हैं और आप भी अफ्तारी करें। इंशाल्लाह I'll see you next time. Peace and take care. Thank you SRS for lovely iftar and the generous one. Ameen, ameen, ameen.